बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज एसबी किचन में बन रहा है क्रिस्पी फ्राइड चिकन नेक्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। क्रिस्पी फ्राइड चिकन I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. में चिकन नेक्स एक एक करके डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑयल में चिकन नेक्स डालने के बाद फ़ौरन से इसमें चमचा ना चलाएं। 2 मिनट कुक करें, उसके बाद साइड चेंज करें। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और दूसरे साइड से भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। क्रिस्पी फ्राइड चिकन नेक्स रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और केचप के साथ सर्व करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।